eigenvalues and eigenvectors. This is most important in matrix. सबसे पहले डिफाइन करते हैं eigenvalues. Definition: let A be a square matrix, A be a square matrix of order n by n over a number system F. This is most important. Now let's try to understand what is number system F. In classical algebra, we deal with number systems. Number systems like integers, rationals, real or complex numbers. These are called number systems with the help of two basic operations. Basic operations are addition and multiplication, that is dot, denoted by dot, and of course their inverse operations of subtraction and division also. Subtraction and division also. These are the basic operations. ये है आपके पास चार बेसिक ऑपरेशंस है जिसको हम कंपोजिशन भी कहते हैं. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन. In fact, we can combine any two objects of a system in several ways to obtain a third object of the same system. Let us suppose we have a machine like that. Here is m, here is n. M integer, n integer. M goes down, n goes down. What is here? M plus n. This is also an integer. If this is integer, n is also integer. This is called composition with respect to addition. This is also called binary operation. M is integer, n is integer, output is also integer. Now let us come to F, field. F-I-E-L-D, field. Field definition: a non-empty set. A non-empty set F is said to form a field. Is said to form a field if in F there are defined two compositions, addition and multiplication respectively, and the elements of F satisfy the following properties. This is set. Now non-empty set. What is non-empty set? First of all, what is set? A set is a well-defined, that is set. What is set? A well-defined collection of numbers, objects, things, etc. is called set. A well-defined collection of numbers, objects, things, etc.
is called set. What do you mean by well defined? यहाँ पे लिख लेते हैं well defined. Well defined. Something is well defined only if anyone can agree on it. We can write something is well defined only if anyone can agree on it is called well defined. For example, a set of red, blue, green, these are the name of colors. This is a set. Let us suppose this is a set. For example, A equal to a set of red, blue, green. The curly brackets denotes a set. We can easily say what is red, blue, green. These are the name of the colors. In another way, we can say a set is well defined. We can write a set is well defined if there is no ambiguity as to whether or not an object belongs to it. Ambiguity means not clear. A set is well defined if there is no ambiguity, means clear, as to whether or not an object belongs to it. It is clear what belongs to the set A. This is called well defined. Let us take example not well defined. Not well defined set. The collection of young people that are residents of India. The collection of young people that are residents of India. This is not well defined because what does it mean young? The someone that is 80 years old, a person that is 40 years old, but a 20 years old person may not consider 40 to be young. Young यहाँ पे किसको बोला गया? That is not clear. This is not clear. It means this is ambiguous. The word young is an ambiguous term. This term is ambiguous. This term is ambiguous. Due to this term, the collection of young people that are residents of India is not well defined. This is not a set. हर कोई इसके बारे में क्लियर नहीं है कि एज ग्रुप क्या है यंग का, 40 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का है, 60 ईयर्स का है, whatever. Hence not well defined. Another example is the collection of residents of India between age group 18 and 25 years. The collection of residents of India between age group 18 and 25 years. Is this well defined or not? Yes, of course, this is well defined. Set, since it is fairly clear who would belong to the collection. Here is clear, 18 to 25 years age. This is clear. If this is not clear, then we can say that this is also not well defined set. Come to the point. Field. हम करे थे field. A non-empty set F is said to form a field if in F there are defined two compositions, addition and multiplication respectively. Set क्या है? A well defined collection of numbers, objects, things, etc. Well defined पता लग गया.
दैट इज नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी है, इट मीन्स कोई सेट है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट जरूर है, दैट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट, चाहे उसके अंदर जीरो ही क्यों ना हो, दैट इज नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से, दैट इज फाई। अगर नॉन एम्प्टी सेट है we can write f is not equal to phi. Phi is empty set. If we take a set of phi that is empty set, that is again a set which is non-empty, this is not equal to phi because one single entry is there. Non-empty set means a single element must be present in this set. This is called non-empty set. एम्प्टी सेट क्या हो गए? द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग ऑन द मून इज ऑल्सो ए सेट विच इज एम्प्टी सेट। दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट्स। अगेन ए फील्ड इज, व्हाट इज फील्ड? ए नॉन एम्प्टी सेट एफ is said to form a field if in F there are defined two compositions, addition and multiplication respectively. ये फील्ड में इसलिए बोल रहा हूं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को अच्छी तरह से ये डिफाइन करेंगे, हमें इसका पता होना चाहिए व्हाट इज फील्ड। नाउ इन शॉर्ट वी कैन राइट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड। अंडर एडिशन दिस इज ए एबेलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस इज ए एबेलियन ग्रुप एंड सम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज मस्ट होल्ड। सबसे पहले हम देखते हैं, हम फील्ड को डिफाइन कर रहे हैं FIELD फील्ड इन शॉर्ट। अंडर एडिशन, सबसे पहले हम करते हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मीन्स दिस सिंबल के अंडर। नंबर 1, A plus B belongs to F for all AB belongs to F. This is called closure property. Closure property with respect to addition. Similarly, number 2, A plus B plus C equal to A plus B plus C. This property is called associative property. Associative property. Number 3, there exists an element 0 belongs to F such that A plus 0 equal to 0 plus A equal to A for all A belongs to F. 0 is called additive identity. You can write 0 is called additive identity. Number 4, there exists an element B belongs to F such that A plus B equal to B plus A equal to 0 for all A belongs to F. What is B? B is inverse of A or negative of A, you can write. Number 5, A plus B equal to B plus A for all AB belongs to F. This is called commutative property. Commutative property. सिमिलरली अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये अंडर एडिशन है और अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन में नंबर 1 प्रॉपर्टी, A into B belongs to F for all AB belongs to filled F. This is also closer with respect to multiplication आएगा। Similarly associative, number 2 we can write here A into B into C equal to A into B into C. This is called associative property. Number 3, existence of identity. यहाँ पे identity 0 थी, यहाँ 1 आएगा। A into 1 equal to 1 into A equal to A for all A belongs to F. 1 is called multiplicative identity. Number 4, existence of inverse. There exists an element B in F such that A into B equal to 1 which is equal to B into A. जैसे हमने यहाँ किया वैसे अंडर
मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। नंबर 5, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, दैट इज एबिलियन प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन 1 2 3 4 5, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 5, ये सारी प्रॉपर्टीज अगर होल्ड है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, एंड बी प्लस सी इंटू ए इक्वल टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 11 प्रॉपर्टीज होल्ड होती है। इन सब को मिला के कैन से field is defined. Now construct example for field. The set Q of rational numbers with respect to addition and multiplication. दो टाइप की ऑपरेशंस लगी है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, फॉर्म में फील्ड। आप चेक कर सकते हैं सारे नंबर्स लेके, ये 11 प्रॉपर्टी सारी होल्ड करेगा। द सेट आर set of real numbers. We can write in this way, set of real numbers. Real numbers is a field. The set of complex numbers, under addition multiplication, set Q, set R, set C form a field. But one example is contradictory. The set I of integers, that is I, set of integers with respect to addition and multiplication is not a field. Is not a field. Why? This is not a field. ये फील्ड नहीं बनाएगा। इंटीजर्स हम पहले कर चुके हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकता है। सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट ए फील्ड। इसका मतलब ये हुआ 11 प्रॉपर्टीज में से कोई एक आधी प्रॉपर्टीज ये होल्ड नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए फील्ड। इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए फील्ड। अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। सिंपल है, लेट इंटीजर्स का सेट बना लो अप टू सोन्स -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सोन। अब हम इसके एलिमेंट्स लेंगे तो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अंडर एडिशन क्या सिंपल सी बात है, अंडर मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। लेट 3 belongs to I. 3 belongs to I, that is integer. But there does not exist an element B in I such that 3 into B equal to 1. This implies B equal to 1 upon 3. Does not belongs to I. आप देख सकते हो 3 का इनवर्स इसके पास नहीं है। क्लियर है? जब इसका इनवर्स इसके पास नहीं है, इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। हम थोड़ा सा बेसिक कर चुके हैं, अब आइगन वैल्यूज को डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। Let A be a square matrix of order n. Aij we can write n by n, square matrix of order n by n, over a number system. Over a number system F called field. अब क्लियर है what is field? Over a number system F. कहने का मतलब है फील्ड जो फील्ड बनाएंगे, जैसे क्यू है, आर है, सी है, इसके एलिमेंट्स इसके पास है। स्केलर लैम्डा, नॉट ए वेक्टर, दैट इज स्केलर,
बिलोंग्स टू एफ, अब फील्ड का कोई एलिमेंट दैट इज लैम्डा, इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू, इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू, eigenvalue of matrix A if there exists a non-zero n by 1 column entry or matrix x, x1, x2 up to so on xn such that a x equal to lambda times x. The non-zero column matrix X is called the eigenvector of the matrix A corresponding to the eigenvalue lambda of A. What is X? X is called eigenvector. यहाँ भी X है and lambda is called eigenvalue. This is the relation. Ax equal to lambda x. X is called eigenvector and lambda is called eigenvalue. कहने का मतलब है आइगन वैल्यू के विद रिस्पेक्ट आइगन वेक्टर रहेगा. दिस इज द इक्वेशन Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स. डेफिनेशन फिर से देखते हैं. लेट A be a square matrix over a number system F, then a scalar lambda belongs to F is called an eigenvalue of A if there exists capital X column matrix n by 1 order such that Ax equal to lambda x. यहां से स्टोरी शुरू हो जाती है आइगन वैल्यू की. अब लैम्डा को कैसे हम निकालेंगे, वो जो होल प्रोसेस है इसके बाद शुरू होता है. इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसकी कैसे इक्वेशन बनाते हैं, ये इसके बाद का प्रोसेस है. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे Ax इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x, मैथमेटिक्स देखते हैं क्या है इसमें, कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स को. Ax माइनस लैम्डा टाइम्स x इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स. अब x को कॉमन करेंगे राइट साइड में, a माइनस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी यहाँ x इक्वल टू 0 बिकॉज लैम्डा x कैन बी रिटर्न एज लैम्डा आइडेंटिटी इनटू x. आइडेंटिटी इसलिए लिखनी पड़ेगी, इस टर्म्स में तो मैट्रिक्स है, इस टर्म्स में मैट्रिक्स नहीं होगी. जो मैट्रिक्स थी कॉलम मैट्रिक्स वो बाहर चले गई, लेकिन अंदर भी हमें दिखाना है कुछ मैट्रिक्स को, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाएंगे. किस ऑर्डर की, जो ऑर्डर A का रहेगा उसी ऑर्डर की. A माइनस लैम्डा आई टाइम्स x इक्वल्स टू 0. एक और इक्वेशन आती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो आपके पास x आया दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर. दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज. आइगन वेक्टर is not equal to 0. Eigenvector is not equal to 0. Always this is not equal to 0. It means इसको 0 होना पड़ेगा. अगर आपके पास A into B is a 0 मैट्रिक्स और ये गिवन है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, एक नॉट इक्वल टू 0, तो अगले को फोर्स होना पड़ेगा 0 होने के लिए. कोई दो टर्म्स है, एक 0 नहीं है तो दूसरे को 0 होना पड़ेगा. लेकिन मैट्रिसेस के केस में this becomes homogeneous system of equations, and we know a system of homogeneous linear equations have a non-trivial solution if and only if its coefficient matrix is singular. अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आ गए यहाँ पे. सिंगुलर मैट्रिसेस कौन सी होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर. नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. और इस केस में सिंपल क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज A minus lambda times I determinant equals to 0. This is 0. This is not a 0 matrix. यहाँ पे matrix है. This is null matrix. This is not a matrix. Here is a 0. Because determinant of anything is a real number. This is also a real number. Left hand side तो real number है, right hand side भी real number हो जाएगा.
तो दैट्स वाई ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू 0. दिस इज अ सिंगल मैट्रिक्स. एक ही मैट्रिक्स बनी ना दोनों की मिलाकर, दिस इज इक्वल सिंगल मैट्रिक्स. तो यहां पे लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट हियर ए सिस्टम of homogeneous linear equations have a non-trivial solution. Non-trivial solution means x is not equal to 0. This is non-trivial solution. If and only if its coefficient matrix is singular, that is coefficient matrix is this is singular. It means A minus lambda I matrix is singular. सिंगुलर कब होगी? जब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहां तक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहां से आगे कुछ केसेस शुरू होते हैं और यहां से आगे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल शुरू होती है और यहां से आगे की कहानी शुरू होती है आइगन वैल्यूज की. This is most important. This equation is also called, this is, you can write star, you can denote it by star, this equation. When we solve this determinant, we find characteristic polynomial equation in lambda. lambda में हमें एक polynomial expression मिलेगा, equation मिलेगी और lambda के roots निकालेंगे. That roots are called eigenvalues. यहां से आइगन वैल्यूज की शुरुआत होती है. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैट्रिसेस.